Hello, friends. Today is 4th of January 2024. In this video, I'm going to have a look at the foreign exchange and the precious metals market. और ये जो वीडियो है ये इंग्लिश में होगा, थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश. समथिंग बॉदरिंग माय नोज. थोड़ा हिंदी और थोड़ा इंग्लिश का मिक्स में होगा ताकि मेजॉरिटी जो ऑडियंस है वो समझ पाए कि क्या बात चल रहा है ओवरऑल. ये जो एनालिसिस है इसके लिए जो सेटअप मैं यूज करूंगा दैट इज द फाउंटेन ऑफ गोल्ड. उसको क्रिएट करने के लिए यहाँ पे इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट एस डी रेनबो वेव वर्जन 1 और साथ में एस डी आर एस आई एक्स ये लगाना होगा. और हम लोग जो करेंगे वो दैट इज द फॉरेन एक्सचेंज. तो फोरेक्स फोरेक्स का सेटअप काइंडली लगा लीजिए यहाँ पे. और एस डी आर एस आई एक्स जो ऑलरेडी मेरा लगाया हुआ है और उसमें मैं ऑप्शन वाला सेटअप अभी के लिए सिलेक्ट किया हूं. सो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे डॉलर इंडेक्स से. इन डेली चार्ट विच इज अ वेरी गुड पोजिशनल टाइम फ्रेम क्या दिख रहा है. एक फर्स्ट अर्ली बाई सिग्नल इन डॉलर इंडेक्स. डॉलर इंडेक्स काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा था फॉर 1 2 3 4 5 कंजिक्यूटिव डेज. अगर ये रिलेटिव स्ट्रेंथ को हम लोग कंपैरिजन करें 5 दिन पहले से डॉलर का, we'll see that dollar has significantly 17 points in strength. Dollar has increased and the relative strength is now score is almost 58, whereas the one of the biggest loser has been Japanese yen, euro. I was expecting weakness in pound, but pound actually did pretty well with overall increase. And Indian rupee usually doing good with the dollar. RBI usually manages it. So Indian rupee has done well, rose in 11 points, but dollar was unbeatable compared to 5 दिन पहले. सो डॉलर इंडेक्स में ये जो बाई सिग्नल आया है ये अगर नॉर्मल कैंडल हम लोग देखेंगे ये कल का जो हाई है उससे नीचे है, बट ओवरऑल दिस अ पॉजिटिव कैंडल. यहाँ पे हम लोग बाई कर सकते हैं. कैंडल क्लोजिंग तक हम लोगों को रेड कैप्स नहीं चाहिए. जैसे कल लेट नाइट तक रेड कैप्स था तो दिस कैंडल वाज नॉट गुड. फॉर मिनिमम एक फुल ग्रीन कैंडल चाहिए. कोई भी रेड रहना इज नॉट एक्सेप्टेबल. So this is the first time a full green candle, a contrary buy signal in a dollar index. So dollar index, that means this decline has come to a halt, some significant halt. क्योंकि डॉलर इंडेक्स जिस तरीके से स्ट्रेंथ दिखा रहा है इट हैज नॉट शोन since almost 31st October. So the short trend, ये जो background green, unless it was 31st October, it was not. So almost after 2 months, November and December, we are seeing this kind of a comeback in the dollar. So if dollar comeback continues, we can expect further decline in the euro and other currencies. Even pound, which has not declined so far, can further decline. And Japanese yen played an important role in the recent weakness in the dollar. Yen has been very much down performer. I think ये जो recent tsunami और earthquake हुआ है जापान में, that is उसका एक इम्पैक्ट आ रहा है. मार्केट का थीम फिर से चेंज हो गया. प्रीवियस थीम था कि बैंक ऑफ जापान इज गोइंग टू रेज इंटरेस्ट रेट और इंटरेस्ट रेट जैसे बढ़ेगा दैट विल हेल्प जापानीज येन. But overall, I say, since it is going to hurt the Japanese economy, now the rate expectation from central bank has fallen for Japan. So that is also hurting the Japanese yen. Also, if you look at the interest rate, let's look at quickly at the interest rate. US 10Y. So this, if I look at the interest rate, we will see that after the big drop, over the last 4 5 days, there has been an attempt of comeback in interest rate. So if I bring the original candle, you'll see that after declining to almost 3.78, the interest rate is actually up by 14 basis points.
So this is one of the reason USD JPY has not, the downside has not materialized, or USD JPY may possibly further upside is possible. We are seeing a first time a buy signal after a very long time. ये sell signal था, इसके बाद पहला buy signal. नाउ इसमें इश्यूज है ये कि ये बैकग्राउंड अभी येलो है, मतलब बाय सिग्नल अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है. बाय ट्रेड का विन प्रोबेबिलिटी दिख सकता है, इट्स अबाउट 29%. सो दिस इज नॉट रियली अ सुपर स्ट्रॉन्ग बाइंग चांस. But if the buying chance succeed, these are the areas likely will be tested. 144.67 and could be this area also gave 146.1 to 146.8. So this can be a major resistance zone from where USD JPY can struggle once again to the downside. फिर हम लोग आ रहे हैं जीबीपी यूएसडी में. जीबीपी यूएसडी जो bearish सिग्नल था डे बिफोर yesterday we saw actually the upside further push. The market is not bullish yet, but हम लोगों को रिस्क को मैनेज करने के लिए note that the stop loss which was originally around 1.273, it has sharply fallen to 1.2686. तो ये स्टॉप को मेंटेन करते हुए जो पोजीशन है, शॉर्ट पोजीशन, आई वुड लाइक टू होल्ड इट by holding. This is the maximum stop loss level which is 1.2684. यहाँ पे टेबल पे क्लियरली विजिबल. जीबीपी जो आरएस है, दैट्स आरएस इज इन अ राइजिंग मोड. So that is another bad news for the GBP USD. So it has so far not materialized. Market bullish तो है नहीं, बियर के ही हाथ में है, बट वो मोमेंटम वाला फैक्टर्स अभी है नहीं. स्टिल अबाउट 9 फैक्टर्स आर विद द बियरिश. वी स्टिल हैव अ फुल रेड कैंडल, नो साइन ऑफ एनी ग्रीन सॉक्स, बट the stop loss I'll prefer to maintain it. Then we have the Euro USD. यूरो यूएसडी में दस रादर एक सेल ऑफ कंटिन्यू हुआ कल के बाद. ये सेल ऑफ एंड एज वी एक्सपेक्टेड दैट डिस्कस कि ये लेवल गेम है 1.084. सो वेरी लाइकली दीज लेवल्स आर, इफ डॉलर का भी स्ट्रेंथ बढ़ रहा है तो दिस लेवल्स विल बी टेस्टेड. From there we can see either further drop or we can see a major comeback. जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो है कल नॉन फार्म पेरोल. अगर नॉन फार्म पेरोल स्ट्रॉन्ग नॉन फार्म पेरोल गेन आया, जॉब गेन्स, then that will support the USD because that will push the interest rate a bit higher. The Federal Reserve will not hike rates, but this will definitely push rates higher and that would further support the US dollar. But whereas if it comes weaker non-farm payroll, then dollar is likely to, ये जो reversal दिख रहा है dollar में, that will once again turn for the selling side. तो यहाँ पे यूरो यूएसडी remain bearish. It's more turning bearish. Momentum, all the momentum factors majority are 6 out of the 8 factors जो है वो bears की तरफ फायर कर रहा है, momentum factors. So दो ये ट्रेंड के अगेंस्ट लॉ मतलब ट्रेड है, ये सेल ट्रेड, फिर भी मैं इसको पोजीशन लिया हूँ. आई विल कंटिन्यू टू होल्ड विद अ स्मॉलर क्वांटिटी एज दिस इज कॉन्ट्रा ट्रेड. और देखते हैं कल जो नॉन फार्म पेरोल व्हाट्स हैपेंस इन दैट नॉन फार्म. तो इसके बाद हम लोग इंडियन पेयर में आ जाएंगे. इंडियन पेयर जेपीवाई आईएनआर में चलिए पहले चलते हैं. यहाँ पे कुछ चेंजेस हुआ है काफी दिनों बाद. जैसे यूएसडी जेपीवाई में बाई सिग्नल आया है, जेपीवाई आईएनआर में सेल. एंड सिमिलर एज पर रेनबो स्ट्रक्चर यू कैन एक्सपेक्ट दिस टू कम डाउन टुवर्ड 5713, means another 1,000 points with the stop loss not exceeding beyond this. So further decline very likely towards 0.57 area. If this stop is not taken out, we are likely to see further decline. Let's check GBP INR.
GBP INR, after this sell, it did not materialize. Matlab, there's a major bounce back. So to prevent a major loss, you can see the maximum stop loss है वो देखिए जल्दी नीचे आ गया, तो इसका मैक्सिमम स्टॉप लॉस 105.55 जो है उसको लेके मैं ये ट्रेड होल्ड करूंगा. आई थिंक दिस इज वेरी लाइकली टू गेट स्टॉप हिट. GBP USD, it's much better. I think it may not get stop it. But GBP INR looks very likely it will be a stop it because the price is too close. We'll have to give market at least 15 minutes to adjust before we look at or place any kind of stop loss. नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं यूरो आईएनआर पे. यूरो आईएनआर कल जो बियरिशनेस दिखाया था उसके बाद फिर और सेलिंग हुआ. इट्स फर्दर सेल ऑफ दैट्स हैपनिंग. ये सेल ऑफ काफी दिनों से चल रहा है. 1 2 3, दिस इज नाउ द 5th डे ऑफ स्ट्रॉन्ग सेलिंग. एंड द सेलिंग इतना ही स्ट्रॉन्ग है, प्राइस एक्शन जो रीडिंग है वो बियर की तरफ जा चुका है वेडनेसडे से. फर्दर डिक्लाइन टुवर्ड्स 90.23 and 90.16 area remains very very likely. तो कुछ शॉर्ट पोजीशन इसमें मैं मेंटेन करना प्रेफर करूंगा. जो ट्रेड did not go well, one is them is that GBP USD, but it can further still drop. It's not clear नहीं है मार्केट में. बट एक ट्रेड जो डेफिनेटली खराब गया है, दैट इज द XAU GBP. XAU GBP I was expecting a break, but it did not. In fact, XAU USD, I'm actually seeing a sell signal here. It's a contra sell signal, low probability, not low, it's a 43 is a good probability actually. But it is a very small candle with a tight stop loss kind of trade. Here the stop loss is 2055, about $10. But this is a signal, probably dollar has further room to move up. जो trade did not go well is the XAU GBP. It's actually gold turned out to be weaker, where after this breakout, we played in the breakout. But after this breakout, gold actually turned weaker and GBP remained almost at the same level or slightly stronger. So that actually did bad for this trade. And so gold British pound, I'll recommend exit. I will exit. I have some position in this one. Obviously that will be in loss. But that I'll prefer to exit. और आप लोगों के लिए फिर से देखिए चेतावनी की कभी भी किसी का सुन के मत ट्रेड कीजिए. खुद देखिए, खुद जानिए. मैं जो कर रहा हूं, मैं समझता हूं मैं क्या कर रहा हूं. मैं पूरी ज्ञान से ये जो रिस्क होता है मार्केट का वो ले रहा हूं. आप शायद सुन के ले रहे हैं किसी का कि इसमें जल्दी पैसा कुछ बन जाता है, मैजिक है इसमें ऐसा कुछ. तो ऐसा मत कीजिए. अब खुद जानिए इसमें पैसा बनाने की कैपेबिलिटी तो है ही. ऑब्वियसली अगर कैपेबिलिटी तो उसमें रिस्क भी है. जैसे स्विमिंग, स्विमिंग में अच्छे फीलिंग, गुड हेल्थ, वर्कआउट, एवरीथिंग इज देयर. बट ऑल्सो देयर इज अ रिस्क दैट यू मे ड्राउन. तो आप डूब जा सकते हैं जब तक आप ठीक से सीख ना ले. तो जब तक, और करेंसी मार्केट में बहुत मेजोरिटी लोग हैबिचुएटेड नहीं है कि दिस काइंड ऑफ ड्रॉ डाउन्स आर वेरी वेरी कॉमन इन करेंसी market. So anyone who gets spooked out by this kind of move, then currency market is not suitable, definitely not suitable for you. So XAU USD is the next gold. We saw that there is a sell signal. तो इस बहाने जो इंडियन गोल्ड है उसको भी देखेंगे, क्योंकि अभी तक इसमें तो सेल सिग्नल नहीं आया, बट डेफिनेटली XAU USD में एक सेल सिग्नल है. इसको बनाने के लिए क्या हम लोग कर सकते हैं? इसको बनाने के लिए हम लोग जो इंडियन गोल्ड है उसको, मतलब MCX गोल्ड, उसको हम लोगों को बेचना होगा. समझ लीजिए कि एक मिनी मिनी को बेचा तो एक मिनी का है कि 100 ग्राम्स. सो एक गोल्ड मिनी का अगर प्राइस है अबाउट 62,552, दैट इज द 10 gram price. So now 100 gram contract size means 6,25,000. So if I'm selling 6,25,000 worth of gold, I'll have to buy equivalent amount of USD INR, मतलब at least
6 contracts to make it a hedge of not hedge, this is not a hedge, to create a synthetic XAU USD. तो ऐसे क्रिएट करते हैं सिंथेटिक पेयर। तो यहाँ पे और कुछ एसेंस, जीबीपी काफी स्ट्रॉन्ग रहा है और ये लग रहा है कि वीक। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे कोई ट्रेड आ रहा है कि नहीं, यूरो जीबीपी इज बहुत इंटरेस्टिंग। यूजुअली ये पेयर मैं प्रेफर नहीं करता ट्रेड के लिए बिकॉज इट्स अ स्लो मूविंग पेयर। इसमें वैसे हर पॉइंट में अगर गेन में जाए तो इसमें सबसे ज्यादा होता है पॉइंट वाइज गेन, बट ये ज्यादा मूव नहीं करता। सो कुछ लोगों को वो भी पसंद हो सकता है कि ग्रेजुअल मूव मूव करके ये अपना टारगेट पे जाए। सो यहाँ पे एक फ्रेश सेल सिग्नल आ रहा है जो ध्यान में रहा, मतलब यूरो वीक है और जीबीपी अभी भी स्ट्रॉन्ग, तो यही स्टांस मेंटेन होगा। सो जीबीपी जेपीवाई है मेरा नेक्स्ट फोकस, जिसमें एक सेल सिग्नल मतलब फॉल्स ब्रेकडाउन के बाद मार्केट ऊपर जा रहा है। इट इज नॉट राइट फॉर बाइंग येट, सो बाई का नहीं सोच रहे हैं। कि ऑपोजिट जो दिख रहा है यूरो, हाँ, जो यूरो येन भी रेडी नहीं है, तो ये दो मिक्स इज आउट। लेट्स चेक द एक्सचेंज यूएसडी विच इज सिल्वर। सिल्वर में ऑलरेडी हम लोग बात किए थे कि मार्केट ऑलरेडी बियरिश है, बट मैं प्रेफर नहीं कर रहा हूं बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स। सो इस लेवल के आसपास है सिल्वर, सो इट कैन इवन कम डाउन टूवर्ड दिस लेवल 22.36, बट आई थिंक नॉट विदाउट मेजर बम्प्स। यहाँ पे 22.86 का सपोर्ट है। ऊपर रेजिस्टेंस आ रहा है 23.75, रेजिस्टेंस आ रहा है 23.31। तो सिल्वर इज बियरिश, बट बियरिश के साथ साथ ये एक रेंज में भी है। तो आपको रेंजिश अचानक से बाइंग, मतलब अचानक से बाई सपोर्ट, ये सब देखने को मिलेगा। इट विल नॉट बी अ वेरी वेरी स्मूथ राइड। For a positional trader, you often can see bounce back because there are very, very important levels around these areas. So gold का वीक होना, दिस इज न्यू, दिस इज इंटरेस्टिंग दैट XAU USD में एक शॉर्ट सिग्नल आया है। सो आई वेट टिल द, अब जब तक मार्क डे एंड होगा तब तक ये सिग्नल प्रिवेल करना चाहिए। अगर इसके बेसिस पे हम लोग ट्रेड ले रहे हैं तो क्लोजिंग तक वेट करना प्रेफर्ड होता है। और स्टॉप लॉस है 2055, $2055, जहां पे ये ट्रेड क्लोज कर देना ही बेहतर होगा। तो ब्रॉडली आई थिंक वी हैव टेकन अ लुक एट ओवरऑल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। आई होप ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इससे मेरा तो हेल्प हो रहा है कि मैं अपना जो ट्रेड है, ट्रेडिंग डायरी काइंड ऑफ ऑनलाइन हो गया वीडियो ब्लॉग की तरह। बट आई होप ये आप लोगों को भी, जो लोग रेनबो सेटअप यूज कर रहे हैं, आप लोगों को हेल्प हो रहा है, या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में नए हैं तो आपको हेल्प हो रहा है ओवरऑल आउटलुक से। So I hope if this is helping you, you'll be subscribing in the channel and you'll also put a like. Thank you so much for watching this video and all the best from my side and happy trading.